ये हूँ टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आमे बर्तन देखिवा जे टेस्ट करवा जे ये जो फंक्शन टा हम गिवन करिछि 1 - 1 by x mod at x is equal to 1 येटा डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ना कंटिन्यूअस फंक्शन। तेणु तुम्हें गोटे कथा सब मन रखि कौन ना ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन are continuous but all continuous function are not differentiable। डिफरेंशिएबल माने तार डेरिवेटिव फाइंड करी हबो। जदि कौन से को फंक्शन रो डेरिवेटिव फाइंड करी हला ताल तो जानिबो से फंक्शन हो कंटिन्यूअस, किंतु ता माने नुहे जे कंटिन्यूअस होतबा फंक्शन ता रो डेरिवेटिव रही। ओके, तो तारा सब कंटिन्यूअस फंक्शन गुड़ाक डिफरेंशिएबल नु ए सब कंटिन्यूअस फंक्शन गुड़ाक डिफरेंशिएबल नु। ओके, अच्छा बर्तमान आम गोटे गोटे क्वेश्चन ताको डिस्कशन करिया जे से माने कंटिन्यूअस फंक्शन कि डिफरेंशिएबल फंक्शन आम ताको चेकअप करिया। ओके, अच्छा आमर क्वेश्चन है जे let the function f of x is equal to 1 - 1 by x mod at x is equal to 1 f of 1 will be 1 - 1 by 1 is equal to 1 - 1 divided by 1 - 1 that is equal to 0। ओके, 0 रो mod 1 - 1 रो mod is equal to 0। f of x जतोले आमे मन करे f of x को आमे 1 - 1 by x फंक्शन नेले at x रे चेकअप कले देखले आलको f of 1 is equal to 0 है। ठीक है, तापर आम कौन करवा राइट हैंड डेरिवेटिव यही फंक्शन रो राइट हैंड डेरिवेटिव चेकअप करिया। अच्छा, बाय द डेफिनेशन कार डेरिवेटिव डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 is by h। एटा होची डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। केमती ना जदि 1 plus h minus f of 1 is equal to h हबार कारण at x is equal to 1 रे। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by h। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h f of x होची 1 - 1 by x। तो f of 1 plus h f of 1 plus h is equal to 1 - 1 by 1 plus h रो mod minus 0 कारण f of 1 is equal to 0 ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर दै। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 1 by 1 plus h रो एलसीएम हैला 1 plus h। then 1 जगह 1 plus h minus 1 तने एटा plus 1 एटा minus 1 कैंसिल हो जो और h by 1 plus h by 1 plus h into ये जो डिवाइड by h is equal to 1 by h से कैंसिल that is equal to 1 by 1 plus h। तले लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by 1 plus h is equal to 1 by 1 plus 0 that is equal to 1। ताले राइट हैंड डेरिवेटिव हमर 1 बाहला। तापर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रे सिम्पली बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू f of 1 minus h। राइट हैंड डेरिवेटिव वो 1 plus h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 minus h minus f of 1 by minus h
ଏତିକି ଖାଲି ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖିଥିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ରେ। So that implies limit h tends to 0, 1 minus 1 by 1 minus h mod divided by minus h. So that is equal limit h tends to 0. LCM नेला हेला 1 minus h minus 1 divided by 1 minus h रो whole mod. अच्छा ये 1 और minus 1 कैंसिल होगा पर रहिबो minus h. तो माइनस एच मोड डिवाइड बाय 1 माइनस एच मोड इंटू ये जो माइनस एच अच्छे डिनोमिनेटर ने सेटा डिवाइड हो दैट इज इंटू हो इंटू 1 बाय माइनस एच। ओके नेक्स्ट रोची कैंसिल होला पर लिमिट एच टेंस टू ए माइनस एच मोड ला एच डिवाइड बाय 1 माइनस एच इंटू 1 बाय माइनस एच। तो ये एच कैंसिल हो और माइनस 1 माइनस एच 1 माइनस एच। सो आम जदि लिमिट को उठेदेवा एच रैल्यू 0 पुट करो माइनस 1 ताले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तेणु ए फंक्शनटा डिफरेंशिएबल फंक्शन नुहे। सो आम ये डायरेक्ट लिखिदे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 1। नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बर्तमान आम कौन करें ना फंक्शन रो कंटिन्यूटी की डिस्कशन करें। ओके अच्छा नाउ ताले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1 माइनस 1 बाय एक्स टेक करछे एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल 1 रे एफ ऑफ 1 इज इक्वल 0। ओके तापर लेफ्ट हैंड लिमिट चेकअप करवा कंटिन्यूटी लिमिट चेक करवा सेठी डेरिवेटिव रे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते ये लिमिट रे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करवा ताले एट एक्स इज इक्वल माइनस 1 रे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस नवा एफ ऑफ एक्स फंक्शन को। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 रो नेबरहुड वैल्यू पाएंगे नेबरहुड वैल्यू नवा लिमिट एच टेंस टू 0 ताले एफ ऑफ 1 माइनस एच जदि एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ताले लिमिट एच टेंस टू 0 रे एफ ऑफ 1 माइनस एच दैट इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस एच। सो दैट इज इक्वल 1 माइनस एच है कौन एलसीएम ये रहा 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 कैंसल लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बाय 1 माइनस एच। तेणु एच लिमिट को आम जब टेक उठेदबा ताल एच जगार 0 पुट करवा तो दैट इज इक्वल माइनस 0 बाय 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आम 0 है। राइट हैंड लिमिट देखा राइट हैंड लिमिट होची लिमिट एच टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच दैट इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 1 minus 1 by 1 plus h mod. So limit h tends to 0 1 plus h minus 1 divided by 1 plus h plus 1 minus 1 cancel limit h tends to 0 h by 1 plus h. So that is equal to h is 0 h is 0 so 0 by 1 plus 0 is equal to 0. तमरे LHL थिला 0 RHL भी 0 है फंक्शन भी 0 एट 1 रे तेणु लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन इज इक्वल 0 देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1 रे। ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 रे भी सेम चेकअप करवा तार डिफरेंशिएबिलिटी आ कंटिन्यूटी हमको डिपेंड करछि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल 0। ओके ताले जदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एट एक्स इज इक्वल 0 रे एफ ऑफ 0 फंक्शन केता हो एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 ताले ला आमे बर्तन चेकअप करिया कोन ना डेरिवेटिव चेकअप करी कि जानवा जे फंक्शन ता डिफरेंशिएबल फंक्शन कि नहे। तेनु हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सारा पर जानवा जे एटा डिफरेंशिएबल कि
डिफरेंशिएबल नुहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal 1 रे by the definition of a derivative limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h एटा तार डेफिनेशन अच्छा जदि फंक्शन ताले हम देखा f of 0 minus h रे फंक्शन कोन हिबो ना माइनस 0 minus h रो होल स्क्वायर x होची 0 minus h ओके एला 0 minus h 0 minus h रो होल स्क्वायर mod 0 minus h डिवाइड बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रो होल स्क्वायर एला h स्क्वायर माइनस h रो mod एला h डिवाइड बाय माइनस h सो दैट इज इक्वल टू माइनस h कैंसिल हो जो हमर एटी कोन छ दैट इज इक्वल टू लिमिट हमें बर्तमान कौन करिया ना दैट इज इक्वल टू माइनस h है ये h को कैंसिल कर दियो बदले हमर ला केते ना लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रो होल स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू 0 केना यदि लिमिट उठे दबा ताले माइनस 0 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तब माने हमर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हैला 0 राइट हैंड डेरिवेटिव देखो by right hand derivative by definition at x is equal to 0 re limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h so that is equal to limit h tends to f of h by h f of h function होची h square mod h divided by h limit h tends to 0 re h एरो mod होची h square into h is equal h cube divided by h limit h tends to 0 h square that is equal to 0 as left hand derivative and right hand derivative f of x is differentiable at x is equal to तार फंक्शन ता डिफरेंशिएबल है या पर तुम लिखि दबो तो if the function is differentiable then it must be continuous तो कंटिन्यूस चेक करवा पड़ा दरकार आवश्यकता नहीं फिर भी मुझे चेक कर दे कि तुम देख अच्छा बर्तमान लेट अस नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर जाइए एट x इज इक्वल टू 0 रे एट x इज इक्वल टू 0 रे तो फंक्शन इज 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिया नबा पई पड़िबो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h function ta f of x will change हो जो कने लिमिट चेंज हो गला तो f of 0 minus h will change हो जो त लिमिट h tends to 0 f of minus h f of x हो जे x f of x is x square mod x तेणु एफ ऑफ माइनस एच हो माइनस एच रो एच स्क्वायर इंटू मॉड माइनस एच सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यू आम जदि लिमिट को उठे दबा ताले एच क्यू इज इक्वल टू एच 0 रो क्यू दैट इज इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट ला 0 फंक्शन भी ला 0 खाली रहिला राइट हैंड लिमिट को 0 केम करिया केम देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एटा थला x टेंड्स टू 0 प्लस एटा अब लिमिट h टेंड्स टू 0 0 हेले एटा इज f of 0 प्लस h त लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h दैट इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h रो स्क्वायर h mod दैट इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब जदि हम लिमिट उठे दबा ताले h क्यूब इज इक्वल टू 0 रो क्यूब दैट इज इक्वल टू 0 ओके दैट इज इक्वल टू 0 ताले हमर कोनला ना फंक्शन f of 0 इज इक्वल LHL इज इक्वल RHL और R इक्वल टू 0 ताले f of x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 रे ओके ये हमर तला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छा तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 3